एज अमिताभ बच्चन। उनके कोई भी स्टोर पे जाना, सब गेट पे एक अमिताभ बच्चन की ऐसे नमस्ते, राइट? एक लोकल आदमी देखेगा, बोले हाँ यार अमिताभ बच्चन दिख रहा है, तो ट्रस्टेड जगह है। बट ये एक्सपेंसिव रहेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इवन फॉर 6 months फॉर यू गाइस टू गेट ऑन बोर्ड सम. It was there, like, the cost was there. The cost was very heavy, but I think the ROI was also better. So did you guys calculate it in terms of अगर आप Yes. using for So we decided to calculate it in a 6 months timeline, right? कि अगर मैं 6 महीने में like एक particular growth achieve करना चाहता हूँ, right? In terms of ROI, valuation, revenue, and everything, right? what is your user acquisition cost? So before that, as I said, our CAC was close to 1400, 1500 per user. Across all channel, average you are saying? This is average. But that's quite high. Yeah. So because when we started, I'm talking about January this year, right? Before Shark Tank happened. Shark Tank हमारा air हुआ था February 23rd, right? वो टाइम पे हमारे कैक्स, जब तक शार्क टैंक नहीं हुआ था तब तक हमारे कैक्स ये थे. शार्क टैंक आने के ये कैक 1500 से 800-900 पे, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली वी वर यूजिंग शार्क टैंक के कोलैटरल्स एंड सो ऑन, एंड ऑर्गेनिक काफी अच्छा इंप्रूव हो, राइट? आफ्टर दैट जब सोनाक्षी आई, ये कैक और कम हुआ और हमारा ऑर्गेनिक और इंक्रीज हो गया, राइट? एंड अब हमारा जो स्टेट है, वी आर एट 70-80% of our users are organically coming to our platform. Our performance spend is next to zero. We only spend on creating a lot of content, and we produce like 40 to 50 pieces of video content every month. Those content are in multilingual forms, and that is where we are getting our majority traffic from. And then we have our agent network. This agent network is going door to door, society to society, to explore and explain our products and so on. No, the agents get paid only if there's a transaction. Yeah, sure. But within that 2% margin, or how is it? No. So there's a fixed fee on every bracket, right? So we have a bracket, तो इतने का होगा तो आपको इतना मिलेगा, and so on, right? So the agent network is 27% of our traffic, 43% is organic, and remaining is referrals and word of mouth and so on. Let's talk a little bit about Shark Tank. बहुत Shark Yeah, experience and the peak. Yeah. अगर एक product होता Shark Tank, what is your honest review about Shark Tank? So see, honestly, मतलब पहले 2 सीजन में मेरे कुछ दोस्त लोग गए थे जिन्होंने फंडिंग उठाई थी. किसी ने अश्नीर से लिया था, किसी ने पीयूष से लिया, right? So I had similar understanding on the kind of traffic that they're gonna get, and it goes up and then it goes down, right? The problem that I've seen with a lot of contestants is that they didn't prepare well to continue this surge, right? So what we did, like for example, when we were in the tank, our episode was short for almost like 2 hours. 2 घंटे की pitch थी, right? And while it was a grilling session, it was very fun. Varun, who is our shark, and unka office और मेरा office almost next door है, right, in HSR. So he's very accessible, very supportive. So fortunately, he understood this market where we were trying to tap into. So that's why he decided to back us, and we got the money. I think episode air हुआ उसके 1-2 महीने में we got the funds. How much you raised? Can you remind me? What was So it? we raised from Varun, we raised 60 lakhs, right? But overall वो Shark Tank का round जो था उसमें we raised around 7.5 CR, right? Almost $1 million. तो सारा हाँ, वरुण का पूरा पैसा आ गया. What we did is we were very sure because funding हुई है, right? तो we were 80-90% confident कि episode तो air होगा, क्योंकि वरुण was there only for one episode, right? और उसने 2 ही कंपनी को फंड किया था, तो we were sure कि episode तो आएगा. And we knew that a lot of companies were not prepared for scale in the past, or they kind of over expected a lot of traffic but didn't happen, and they had to lose out on inventory and so on. So what we did is we decided to ensure कि जो भी peak हमारे पास Shark Tank से आए, right, we maintain that peak for few months, right? So what we did is and this is something that not a lot of founders will talk about, but we partnered with a lot of meme creators. Wow. Right? We partnered with a lot of meme creators. We said हमारा episode आने वाला है, अच्छे बुरे जो memes बनाना है बनाओ.
बनाओ, राइट? एंड जैसे एपिसोड आया, एक पीक आया, वो राइट, वी हैड अराउंड टोटल कुछ अराउंड 400-500 मीम्स बने, उसमें से कुछ 3-4 ऐसे थे जिनके ऊपर 15-20 मिलियन की, and these content eventually became viral. We onboarded an agency partner who started creating viral content during that time for us, which again started getting a lot of views, right? तो हम लोग ने इंश्योर किया February 23rd से, ठीक है, अप्रैल एंड तक के हमारे पास वो पीक इस कंटेंट, राइट? ड्यूरिंग दैट टाइम वी एंश्योर्ड कि हम फोर्ब्स पे हमारा आर्टिकल हो, वी एंश्योर्ड अ गुड पीआर एंड सो ऑन, एंड हम लोग ने फंड रेज की न्यूज भी तब तक के लिए रोक के रखी थी, राइट, टू एंश्योर कि एवरीथिंग हैपेंस ऑन टाइम। एंड जैसे अप्रैल का हमारा पीक खत्म होने वाला था, राइट, अप्रैल के एंड में हम लोग ने सोनाक्षी के साथ कॉन्ट्रैक्ट प्लान करके रखा था, तो वी एंश्योर्ड कि सोनाक्षी का जैसे कंटेंट हो 10 मई का, तो अप्रैल 30th को हम लोग ने एड शूट करी, 10 तारीख को हम लोग ने एड रिलीज करी, वो 10 दिन में हम लोग ने सोनाक्षी का एम्पलीफिकेशन प्लान करके रख लिया, राइट? फिर वो 10 मई से लेके एंड तक के, अभी तक के नवंबर एंड तक के, राइट, अक्टूबर एंड तक के, दिवाली तक के, राइट, वी एम्पलीफाइड दैट। ये तो आपने पूरा जूस, वाह। Yeah, मतलब you have to tap into these guys, like, the best of the meme pages that are there out there, right? Just You have, message. yeah, you just message them, like, someone from them will respond, right? Whoever responds, आप इनसे बात करो। हम लोग ने कुछ नहीं, हमने 2 इंटर्न्स को बैठा के It peaked. और क्या रिकॉर्ड प्रॉफिट थे when the IPO happened and रखा। everything. The point is ना कि Mama Earth was never a good business, Really? right? I mean, like, if you look at it, 4 मेजर मैन्युफैक्चरर्स है कॉस्मेटिक्स के इंडिया में, राइट? उन मैन्युफैक्चरर्स के नाम, लेकिन सब लोग उन्हीं से बनवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट, राइट? तो ये पूरा ब्रांडिंग गेम था मामा अर्थ का, राइट? दे स्टार्टेड विथ वन ऑन वन, लाइक वो अनियन शैम्पू पे इनका वन ऑन वन ऑफर अभी भी चलता है मेजोरिटी स्टोर्स पे, आप राइट लाया, मतलब फ्रॉम क्यूआर कोड पेमेंट्स टू वॉलेट टू यूपीआई, राइट? स्केल करने वाला पेटीएम ही है। Wow. अगले साल करना पड़ेगा। हो जाएगा, बट That's true, but उन पे रेगुलेटरी जो आया था उससे they lost lot of business. हाँ, मतलब उनका यूपीआई बिजनेस हिट हुआ, दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ ट्रांजैक्टिंग यूजर्स, बट नाउ दे आर गेनिंग, Yeah, which is a good part. that's a good sign. Yeah. And I don't use any other UPI app. So, like, I still use Paytm and only Paytm. Wow, that's So, good. and you'll see that, like, for a consumer who's using PhonePe will never switch to Paytm. And for a consumer who's using Paytm will never switch to PhonePe. क्या reason है? I don't know. I mean, like, it's just the simple, it's Ola versus Uber, Swiggy versus Zomato wala use case. Yeah, नहीं. So, मैंने क्या देखा है? मैंने user का usage pattern देखा है. Probably a person who's using PhonePe, right, will only be using Ola and will be using Zomato. And someone who's probably using Paytm can use Zomato, can use Ola और Uber both, right? तो इस तरीके के बहुत अच्छे स्टडीज है, right? वो Right? stack defined है। वो स्टैक डिफाइंड है, right? वो स्टैक डिफाइंड है। That's Yeah. interesting. इसमें थोड़ा dig in करना। Yeah. It's a good behavior. फोन पे जो वो अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट रिलीज करता है ना यूजर्स यूजेज की, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, देखना आप यूपीआई यूजेज की। उन यूपीआई यूजेज में एपोग्राफी देखना कि आप और कौन कौन से एप्स यूज होते हैं, तो आप देखोगे फोन पे के साथ वाले एप्स बहुत डिफरेंट है, पेटीएम के साथ वाले एप्स बहुत डिफरेंट है। Yeah, right. It's good यार, it's good. Finally कुछ अच्छे स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं इंडिया में। Yes, yes. And we touched upon one aspect I want to touch upon. So we touched upon this after Shark Tank का prep. What is the prep for before Shark Tank also? Because उस पे भी ज़्यादा highlight हुआ नहीं अभी तक. Like, how do Yeah. you prepare for that before? यार ऑनेस्टली पता है, मैं शार्क टैंक कभी अप्लाई नहीं करने, एंड आई टेल यू व्हाई, लाइक इट्स 10-12 साल पहले ना इंडिया का एक और वर्जन स्टार्ट हुआ था, उसमें भी अनुपम थे, राइट? वो ईटी पे आता था, इकोनॉमिक टाइम्स से किसी पे आता था, अच्छा शो था वो, लाइक मैंने देखा था कुछ लोगों की बेइज्जती होते हैं, एंड आई वाज लाइक कि भाई टीवी पे जाके बेइज्जती कभी, तो माय पॉइंट वाज ऑलवेज कि भाई टीवी पे जाके बेइज्जती नहीं करानी, भले ही हम कितनी अच्छी कंपनी हो, ठीक है, नहीं करेंगे। Then this one day I was in Mumbai, वेंचर कैटलिस्ट का एक फाउंडर्स डे होता है, राइट, जिसमें वो सिर्फ अपने पोर्टफोलियो स्टार्टअप्स को बुलाते हैं, एंड काफी अच्छा इवेंट होता है। तो वहां पे शार्क टैंक टीम वाज देयर, राइट? एंड वहां पे कैसा होता है ना कि मतलब एवरी पोर्टफोलियो फाउंडर हैज अ टेबल एंड थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर दे कम टू रैपिड डेट यू, राइट? बहुत सही इवेंट होता है। तो वहां पे शार्क टैंक की टीम, राइट, उन लोग ने पूछा क्या कर रहे हैं, हमने बताया, दे वर लाइक यार यू गाइस कैन बिकम, यू आर अ मास प्रोडक्ट, एंड शार्क टैंक पे आने का मतलब ही है कि आप मास तक, व्हाई डोंट यू फिल अप द फॉर्म? आई वाज लाइक चलो ठीक है, कंसिडर करके देखते हैं।
ऑन दैट नाइट इटसेल्फ पहला जो फॉर्म होता है 4-5 क्वेश्चन होते, ज्यादा होते नहीं है, मैंने फिल कर दिया, राइट, शॉर्टलिस्ट हो गया। सेकंड फॉर्म आ गया, सेकंड फॉर्म भी मैंने सबमिट कर दिया, वो भी शॉर्टलिस्ट हो गया। फिर उसके बाद एक कॉल हुआ, उस पर कुछ डेटा एक्सचेंज हुआ। उसके 2 महीने के बाद, 1 महीने तक के कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 महीने के बाद उन लोगों ने बोला कि एक स्टूडियो राउंड होगा बैंगलोर में, आप यहाँ आ जाओ। फिर वो स्टूडियो राउंड हुआ, फिर उसके बाद भी 2-2.5 महीना हुआ, कुछ नहीं आया, राइट। नवंबर में दे एंड अप कॉलिंग मी कि 15 दिन में आपको मुंबई आना है, शूटिंग के शूट है। मेरा 16 दिसंबर का शूट था, राइट। 16 दिसंबर को मेरा शूट हुआ था इन मुंबई। दे कवर्ड द ट्रैवल, स्टे एंड एवरीथिंग, राइट। बट हम लोग गए वहां पे, हम लोग अपनी पूरी पिच प्रिपेयर करके लेके गए थे। लाइक दे अंडरस्टूड आवर स्टोरी एंड एवरीथिंग। छोटी मोटी चीजें मॉडिफाई करवाई उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि टेलीविजन पे ये सब चीजें नहीं जा सकती और समथिंग, राइट, और आपको हिंदी में बोलना है। तो एंड जो जो चीजें हम लोग ने पिच में प्रेजेंट करी थी, उसके हिसाब से उन्होंने पहले कंटेंट भी मंगाया कि ये सब चीजें आप सच बोल रहे हो, कि आपके पास इनका प्रूफ है, राइट। वेरीफाई तो हुआ। वेरीफाई होता है पहले, ठीक है, जब मॉक सेशंस होते हैं। फिर उसके बाद मॉक सेशंस होते हैं, राइट, जिसमें शार्क्स नहीं होते, बट हमारा पूरा स्टूडियो में पूरा सेम सेटअप, सेम वॉक, सेम कपड़े, हर एक चीज टेस्ट होती है, राइट, ताकि आप टाइम पे वो ना हो जाओ, घबरा ना जाओ, हर एक चीज हो जाता है। एंड इमेजिन ना, व्हेन यू आर वॉकिंग इनटू टैंक, 500 कैमरा आपको वो कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी लाइट्स, द शार्क्स आर वेरी फार फ्रॉम यू। तो अगर आप नॉर्मल बात करोगे तो उनको आपकी आवाज नहीं आएंगी, आपको उनकी आवाज नहीं आएंगी। इट्स ऑल माइक, राइट। तो जो ये हमारा माइक था, माइक से उनको स्पीकर से आवाज आ रही थी और हमको स्पीकर से उनकी आवाज आ इतना डिस्टेंस था। रही। डिस्टेंस बहुत होता है, आवाज नहीं आती, आप चिल्ला के तो, सही बात है। राइट, राइट। तो वो पूरा बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो वो प्रेप, मतलब ऑलमोस्ट दे टुक व्हाट, ऑलमोस्ट 1 वीक टू वॉक अस थ्रू विद द एंटायर एक्सपीरियंस। और वो एक हफ्ते में, और जिस दिन हमारा शूट होता है, उस दिन जब हम स्टूडियो में एंटर करते हैं, सुबह 6 बजे बुला, राइट, हमारा फोन लैपटॉप सब ले लिया जाता है, ऐसा क्यों? so that we don't call or inform anyone, or we don't click selfies or whatever, right? तो जब तक ये पूरा डील होता नहीं है, जब तक ये खत्म नहीं होता है, तब तक हमको फोन नहीं दिया जाता है। वरना और फोन प्राइस देने के बाद, कोई और इन्वेस्ट कर। और फोन देने के बाद मतलब वो लोग ये भी बोलते हैं कि आप जब तक एपिसोड, क्योंकि वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, एंड यू कैन नॉट रेज एनी फंडिंग बिटवीन आल्सो। नहीं नहीं, यू कैन, हमने तो करी थी। हमको तो पता था ना भाई, हमको शार्क टैंक में फटेट, तो हम लोग तो किसी को बताया ही नहीं ना हमने, बट हमने बोला कि भाई वी हैव फंडिंग। That's a good experience. That's a good Yeah, for sure. I mean, like anyone who is building in consumer space definitely should explore going to Tank. For sure. Yeah. amazing. Well, thanks a ton. But this is such an interesting space and segment. True, 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 true. Anything you want to share? Yeah, I think like these are exciting times. Market is, I think, the perfect valuation corrections already aa chuke hai market mein. Right. I think this is the perfect time for anyone who has ever thought of doing something, right? To create something and probably scale it to the people. Amazing. Yeah. Well, thanks a ton, Veer, and for your time. Really interesting and fun Same here, conversation. yeah. And wish you all the best. Thanks a lot. Yeah. Thanks a lot for having me.